Very important act today we are going to discuss, and in just 4 slides, in just 4 images, I'll make you remember the entire act. So if you're listening to me, हम सिर्फ छोटा सा discussion करेंगे 4 slides का, which will be a very quick revision of the act, and then we'll go and jump on to the questions. So Protection of Children from Sexual Offences Act, many of you were saying that you want a session on this. So hence, I'm going to go ahead and explain you also things in it. So let's move ahead. This is the timing. The timing is fixed, and anyone who wants to know what act will be discussed should be there on the Telegram group. Hi Surbhi, good evening. And this act is very difficult to remember, especially because of so many punishments and other things, as well as definitions. Definition भी बहुत ज़्यादा है इस act में, तो हम इसे सिर्फ 4 slide में summarize करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपको हमेशा याद रहे. Today, I am just dealing with half, or you can say, the important portions of the act. Preamble of this act says to protect children from sexual assault, sexual harassment, pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences. Now, this act is Act number 32 of 2012. The enactment date is 19 June 2012, and very easily to remember, 14th November is the enforcement date. 14th November has been made purposefully as the enforcement date. Now, the total sections in this act is 46, and hence it is a very huge act to remember. But we are going today to discuss the important provisions of the act. Total chapters that we have is 9. Amendments were made in 2019 as well as in 2013. Now, first, let's give it a quick revision about the act. What does this act say? Now section 3, actually definition section जो है इसमें एक amendment आया था 2019 में, and that was basically what is child pornography. Section 2 के DA में आया था what do you mean by child pornography. ये कौन सा amendments आया था? 2019 के amendments आया था, ठीक है. And definition of child pornography, what did they say? They say that means of any visual depiction, कोई भी तरीके का visual depiction of sexually explicit conduct इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, मतलब किसी भी तरह का विजुअल डिपिक्शन जिसमें एक चाइल्ड इन्वॉल्व है और वो चाइल्ड के लिए आप या तो फोटोग्राफ ले रहे हो या वीडियो ले रहे हो या किसी तरह का उसे स्ट्रीमिंग कर रहे हो इन लाइव, या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है या इमेज को क्रिएट किया गया, मॉडिफाई किया गया, जो आजकल बहुत ज्यादा होता है मॉडिफाइंग द इमेज. सो दैट इज नोन एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एंड दैट डेफिनेशन वाज एडेड इन 2019 itself with the amendment of 2019. Now, जो definition section है इस पूरे act का, that is very easy to remember in the sense क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं. जो सारे definitions हैं उसके explanation आपको section 3 से लेके 15 तक मिलेंगे. इसलिए actual अगर पूछा जाए कि definition sections कहाँ पे हैं तो आपको वो समझ में आएगा. पहले definition, फिर punishment, फिर definition, फिर punishment. That is how this act goes. और section 2 में सिर्फ बोल दिया गया कि इस section से related है, इस section से related है. Now we'll move to the chapters. Section 3 talks about penetrative sexual assault. तो penetrative sexual assault क्या होता है? If he penetrates into his penis or puts his mouth into it or insert any object into the thing or manipulates the body somehow. तो ये 4 points है: manipulation, insertion, या फिर he applies his mouth or insert something. ये 4 points है which defines what is penetrative sexual assault. और इसका punishment next section में दिया हुआ है which is section 4. Now section 4 talks about the punishment which is basically 10 years.
सेक्शन 4 में भी अमेंडमेंट आया था 2019 में, एंड इट टॉक्ड अबाउट, उसको चेंज करके हमने 10 इयर्स कर दिया है। पहले 7 इयर्स था, अब इसे हमने 10 इयर्स कर दिया। पहले ये 7 इयर्स था, नाउ विद 2019 अमेंडमेंट इट इज 10 इयर्स। एक और अमेंडमेंट लाए थे हम 2019 में, जब हुआ था तो एक और चेंज हुआ था इस सेक्शन में। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में हमने एक और चीज ऐड की कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी 16 साल से कम के इंसान के चाइल्ड के ऊपर हो रहा है, तो उसका जो पनिशमेंट है इट विल बी नॉट लेस देन 20 इयर्स। सो दिस इज सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, ये भी 2019 से ऐड हुआ था। फिर 2019 से एक और क्लॉज ऐड हुआ था, वो है सेक्शन 4 सब क्लॉज 3, जहां ये बोला गया था कि जो भी फाइन पे हो रहा है वो फाइन हम विक्टिम को दिया जाएगा, और वो फाइन किसके लिए यूज किया जाएगा, विक्टिम के मेडिकल एंड रिहैब के पर्पज से यूज किया जाएगा। जो भी फाइन अक्यूज ने दिया है वो विक्टिम के मेडिकल एंड रिहैब पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। So this was section 3 and section 4. Section 3 में defined है penetrative sexual assault, and section 4 में उसका punishment है which is not less than 10 years. And if someone is below 16 years, जिसके साथ if the victim is below 16 years, then the punishment is nothing less than 20 years. Now let's move to section 5. Section 5 talks about aggravated penetrative sexual assault. अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं कि एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी वर्ड एग्रावेटेड आएगा ना, तो इतना आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पे या तो पुलिस ऑफिसर होगा, या कोई पब्लिक सर्वेंट, या किसी हॉस्पिटल में किया गया होगा, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया गया होगा, जहां पे एक ट्रस्ट रिपोज किया जाता है, ऐसी किसी जगह में अगर ये असॉल्ट हुआ होगा, इसलिए हम उसे कहते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। कई बार इसमें भी एक चेंज ऐड किया गया था, वो है जे वाले क्लॉज में, जहां पे हमने कॉज ऑफ डेथ को भी इंक्लूड किया था। अगर उस चाइल्ड का या उस विक्टिम की डेथ हो जाती है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पूरे पनिशमेंट वाले चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो डेथ वर्ड अभी ही ऐड किया गया है रिसेंटली 2019 में, राइट। सो दिस इज एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। नाउ इसमें बहुत सारी और चीजें आ जाती है कि जो चाइल्ड है या वो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो गया है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, या फिर उसके साथ किसी तरह का वेपन या ऑब्जेक्ट या कोई डेडली वेपन यूज किया गया है, ये भी सारे फॉर्म्स है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के। सो ये जो सेक्शन 5 है, जब भी हम वर्ड एग्रावेटेड यूज करते हैं, इसमें ऐसा कोई पर्सन जिसपे हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रिपोज करते हैं, या तो ऐसा कोई पर्सन हो जैसे पब्लिक सर्वेंट या कोई हॉस्पिटल हो गया या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, अदरवाइज एनीथिंग विच इज रिलेटिंग टू सम काइंड ऑफ डेडली वेपन विच इज कॉजिंग द सेक्सुअल असॉल्ट, जिससे हुआ है वो एक डेडली वेपन हो, या फिर किसी तरह का वायरस ट्रांसमिट हुआ हो, या उस वजह से उस चाइल्ड की डेथ भी हो गई हो, देन ऑल्सो वी यूज फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट। नाउ इसके सब क्लॉज ए से लेके यू तक में आप सारे डेफिनेशंस जो मैंने एक्सप्लेन किए, आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, देन यू हैव डन इट, सो ऑल दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नाउ इसका पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 6 में, और पनिशमेंट क्या है, 20 years, right? So the punishment is given in section 6, it is 20 years, और section 6 सब clause 2 भी 2019 में ऐड हुआ था, ये कहते हुए कि अगर जो भी फाइन पे किया गया है विक्टिम को या उसके मेडिकल एक्सपेंसेस प्लस उसके रिहैब एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जा सकता है। Now let's come to section 7. Section 7 talks about sexual assault. Now, sexual assault क्या हुआ? Sexual assault is basically touching someone in a way without any kind of penetration. What is sexual assault? Touching someone or making the child touch something without any kind of penetration, that is sexual assault. और ये डिफाइंड सेक्शन 7 में है, और इसका पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 8 में। सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट कितना है, 3 years, एक्सटेंडेबल अप टू
5 years, right? So this is sexual assault. Sexual assault basically means touching or making the child touch anything without any kind of penetration. That is sexual assault. Now let's move to chapter 3. या थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं सेक्शन 9, 10, 11, 12 भी. Now, Section 9 defines aggravated sexual assault. Again, sexual assault का मतलब any kind of touch or making the child touch anything without penetration. और aggravated word तब add हो जाता है जब यहाँ पे या तो कोई पुलिस या आर्मी पर्सन या कोई पब्लिक सर्वेंट ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं, या किसी हॉस्पिटल में या किसी चाइल्ड होम में, चाइल्ड शेल्टर होम में ये सब हो रहा हो, देन इट इज नोन एज एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. और इसका पनिशमेंट है 5 years एक्सटेंडेबल अप टू 7 years. इसका पनिशमेंट है 5 years एक्सटेंडेबल अप टू 7 years. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. हमने सेक्सुअल असॉल्ट समझा जहां पे पेनिट्रेशन नहीं होता लेकिन टच जरूर होता है. अब आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस डेफिनेशन में डन विथ सेक्सुअल इंटेंट. किसी तरह का सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया गया हो. और क्या किया गया हो? ईदर यू मेक और अटर सच जेस्चर्स, या तो आप ऐसे जेस्चर्स बनाएं या फिर आप अटर ऐसा कुछ करें, या फिर मेक अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी लाइक स्ट्रिपिंग ऑफ और समथिंग लाइक दैट, और शो एनी ऑब्जेक्ट टू एनी चाइल्ड, कोई ऑब्जेक्ट चाइल्ड को दिखाना, या फॉलो करना चाइल्ड को डायरेक्टली, किसी भी तरह उस चाइल्ड को फॉलो करना डायरेक्टली या फिर किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी. इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टली, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी अगर आप चाइल्ड को फॉलो कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज नोन एज सेक्सुअल हैरेसमेंट. फिफ्थ, थ्रेटन टू यूज मीडिया. एंड सिक्स्थ, एंटाइस द चाइल्ड. तो ये सारे फॉर्म्स है सेक्सुअल हैरेसमेंट के. utter or making gestures, make a child exhibit his body, show any kind of object to the child which is relating to sexual stuff, follow child directly, either directly or through some online medium, threaten to use media against him or to entice the child for something. तो ये सारे फॉर्म्स है सेक्सुअल हैरेसमेंट के. अब इसका पनिशमेंट ऑफ कोर्स सेक्शन 12 में है, और सेक्शन 12 में क्या पनिशमेंट है? 3 years plus fine. 3 years plus fine is the punishment for sexual harassment. Sexual harassment is defined under section 11, but the punishment is given under section 12. तो यहां तक हम पहुंच चुके. अब चैप्टर 3 में पहुंचते हैं. Chapter 3 talks about using of child for pornographic purposes. Now this is very different. Using of child for pornographic purposes, you can use it in any medium, any kind of medium or internet or any kind of social media site. If you are using something of a child for pornographic purpose. Now the main intent was any kind of punishment which has been given here is 5 years plus fine. अगर आप किसी भी तरह पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए एक चाइल्ड की पिक्चर या इमेज यूज कर रहे हैं, या फिर उसे किसी भी तरह चाइल्ड को यूज कर रहे हैं, देन ऑल्सो द पनिशमेंट इज 5 years plus fine for the first offense, and for the second time offense it is 7 years plus fine. जब हम सेक्शन 14 को डेप्थ में देखेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसको आपके लिए ब्रेकअप कर दिया है. एंड इफ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन हियर, थिंग्स वुड बी प्रिटी इजी. So section 14 talks about, 14 subclause 2 talks about using it for pornographic purpose plus penetrative sexual assault. Section 14.3 talks about using it for penetrative purpose plus aggravated penetrative sexual assault. Section 14.4 talks about penetrative pornographic purpose and which is sexual assault. राइट तो ये सारे पनिशमेंट्स आपके सेक्शन 14.2 से लेके 14.5 में दिए हुए हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज. नाउ सेक्शन 15 में मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, एंड दैट इज ये सारे कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे
who stores or fails to, which is punishment for storage of pornographic material involving a child. Now, who stores or fails to delete? Both. The punishment should be 5,000 rupees. And for second time, I mean for repeated offenders, for second time, if you commit the offense, the punishment would be 10,000 rupees. You have to pay 10,000 rupees. Section 15(2) talks about any person who stores or displays or distributes. The punishment is 3 years. Who stores, displays or distributes. Any person who store, display or distribute, the punishment is 3 years. अगर भूल जाते हैं डिलीट करना तो आप पे फाइन जो है वो 5,000 रुपीज का है, या अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो भी आप पे फाइन 5,000 रुपीज का है. So suppose someone else had given something to keep and you don't know what was inside it, and it had content of pornographic purpose के लिए वो content था उसमें, and you did not see it, but still you can be held liable for this much amount. Now if you store, display and distribute, then the punishment is 3 years. And if you completely store it for commercial purpose, then the punishment is 3 years extendable up to 5 years. Now if I talk about second time offenders, or second time अगर ये commit कर रहे हैं आप, तो of course fine increase हो जाता है 5 years to 7 years. So if you just remember these 4 slides, आपके maximum questions जो हैं पूरे के पूरे इस एक्ट से कवर हो जाएंगे. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इवन राजस्थान जुडिशरी, or if you are preparing for any state's judiciary where this act is relevant, please go through this session and just these 4 slides. Now let's come to chapter 4, which talks about abetment. Now abetment, as we have already seen, means 3 things: either someone instigating you, or intentionally aiding you, or engaging you. So that is defined as abetment under section 16. Section 17 talks about punishment for abetment, and what it says कि जो normal punishment है same as that of the offense which is committed, वही punishment भी होगा for abetment. And section 18 talks about punishment for attempt. Now what is the punishment for attempt? Same as imprisonment provided for the offense, और इसमें थोड़ा सा और है, 1/2 of the purpose, तो वो आप एक बार देख लेना. Now chapter 5, let's come to chapter 5. I'm explaining everything in detail, and believe me, whatever I've explained इससे questions हैं आगे. Chapter 5 is procedure for reporting cases. Now section 19 is basically for reporting the offense. अगर किसी को हल्की सी भी भनक है, which is an apprehension or a knowledge to report, then you have to report it to the special juvenile police unit or the local police. So if you already have an idea about some kind of things going on which is not good, which is related to child pornography, which is related to uh, uh, some kind of thing which is related to the child sexual assault also, then you need to report this to the special juvenile police unit or the local police, that is given under section 19. Now 19(5) has one important thing, and hence I had to mention it here, that in case they feel, the special police unit or local police feel the child is in dire need of some kind of care and protection, then they will admit him either to the shelter home within 24 hours or to the hospital within 24 hours. Apart from this, the local police also have to report the matter to Child Welfare Committee. This is Child Welfare Committee. Right? Now section 20 talks about if these people, यानी कि मीडिया हाउसेस, लॉजेस, होटल्स, क्लब, हॉस्पिटल, स्टूडियो, फोटोग्राफिक स्टूडियोज, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से किसी को पता चला that any person comes across and knows that a child is being sexually exploited, then you should inform the police or the local police, the special juvenile police unit or the local police. So anyone who gets to know about such kind of exploitive practices going on against a child in a media place, in a hotel, in a lodge, in a club, in a hospital or a studio or a photographic studio, they need to inform the special juvenile police unit or the local police.
Now section 21 talks about punishment on not informing. Suppose आपको section 20 में पता था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, a child is being sexually exploited and you have not informed it, then you can be held liable for 6 months for not informing it. ये सेक्शन 21 में लिखा है. जस्ट इसका ऑपोजिट 22 में लिखा है कि अगर किसी ने एक फॉल्स कंप्लेन कर दी, इफ समवन हैज गिवन अ फॉल्स कंप्लेंट, है ना, then also you can be liable for 6 months. Suppose nothing like this was going on, just to defame that person or that company, you did this entire act on a false complaint, and hence you can also be liable for 6 months. Now, section 23 talks about procedure for media and how media is to be held liable if such content goes out. Now, if I talk about media, then there is a point of vicarious liability that we'll see in section 23 subclause 3, where the owner of the media is held vicariously liable because someone in the office have not followed the guidelines, which is the procedure for the media to not let these content out, right? So the owner of the the house who have published it, or maybe the media owner, can be held vicariously liable in the matter. The punishment for them is 6 months, which can extend up to 1 year. Now, with this, chapter 5 will almost end, and now we'll begin with the questions. So, जिसने भी बहुत अच्छे से सुना है, they can answer all of the questions. We'll begin with question number 1 first. The Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act came into force on. Anyone? Quickly. So, anyone can quickly answer this, give answer to this. कि 2019 का एक्ट का फोर्स में आया. It came into force on 16th of August 2019. Let's move to the next question. Act number of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ये कौन सा एक्ट है? Just in the first slide I've mentioned it. Just in the first slide I've mentioned it. Which act is this? Quickly. So 2 is what 2? What question we have? Now, just like yesterday, someone has said that they got selected in the examination. If you people are serious enough and you just follow the questions and the little bit of quick revision, you are going to clear this ADPO exam. Or if you are giving Rajasthan Judiciary, then also you're going to clear. At least some of those acts are quite relevant for your examination. Right. So the answer to 2 is B. Let's move ahead to question number 3. The Protection of Children Act received the assent of President on which date? The President have assented to this on which date? The original act received the assent on which date? Yes, the answer is 19 June 2012. So some of you who have given the correct answer, let's move on. Under the act, the word child means a person below the age of what years? Child का definition क्या है under the act? And for your information, child is defined under section 2 clause D. अगर चाइल्ड का डेफिनेशन है तो वो सेक्शन 2 क्लॉज डी में है. तो इफ यू आर having a barrack, you can just look up to it. The answer to it is 18 years. Let's move ahead. Question. The definition of which of the following is inserted by Protection of Children of Sexual Offences Amendment Act 2019 in the original act of 2012? मतलब कौन सा एक डेफिनेशन 2019 में ऐड किया गया सेक्शन 2 में? अभी अभी मैंने आपको ये बताया था. So just move on quickly and we'll complete with it. सेक्शन 5 तो नहीं है. सेक्शन 2 में कौन सा एक पार्ट है जिसमें हमने डेफिनेशन ऐड किया था? 5A, and the section number 2 it is DA, right? So the answer is child pornography, और वो section 2 में
डी ए में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट इन। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जो फैमिली कोर्ट्स में बताया गया है, जो डीवी एक्ट में बताया गया है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में बताया गया है, या जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में बताया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप? क्विकली कैन वी हैव द आंसर? वेरी क्विकली, कहाँ पे दिया गया है? वेरी गुड। और डोमेस्टिक वायलेंस के 2F में ये दिया गया है, इस एक्ट के 2F में डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। Question number 7. The words and expression used in the act and not defined shall have the meaning assigned to them in. ये एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स एंड एक्ट्स हैं, ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है इसका आंसर। So if you don't know, just look up to section 2 sub clause 2. Now we'll move ahead with it. Section 2. Can I have it again? Question number 7 का please answer बताओ फटाफट, so that we can move ahead. राइट, एनी ऑफ द अबव। लेकिन इसमें एक और एक्ट है जो ऑप्शन में नहीं है, और बाय चांस वो आता है अगर आंसर में, तो वो सीआरपीसी है, वो भी लिखा हुआ है वहां पे। राइट, तो ऑप्शन में नहीं है, हालांकि सीआरपीसी भी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज एक्सप्लेन्ड इन विच सेक्शन? अब बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे हम सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ डिफाइंड है? फटाफट we can have the answers. Question number 8. Question number 8, we can have the answer. Penetrative sexual assault कहाँ defined है? Correct, it is defined under section 3. प्लीज ध्यान देना, स्टार्ट हमने पीएसए से ही किया था, वो सेक्शन 3 में डिफाइंड था। फिर उसका पनिशमेंट हमने किया था, वो सेक्शन 4 में डिफाइंड था पीएसए का। और पीएसए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसे ही खत्म हो रहा है तो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, वो डिफाइंड है सेक्शन 5 में, और उसका पनिशमेंट हम आगे देख रहे हैं सेक्शन 6 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज हाउ मच? इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये चेंज हो गया है। द पनिशमेंट इज समथिंग नॉट लेस देन 10 years. क्वेश्चन नंबर 9, द आंसर इज डी, नॉट लेस देन 10 years, amended by 2019. The punishment for penetrative sexual assault is how much? Imprisonment for not less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and fine. Let's go to question number 10. Penetrative sexual assault on child below the age is punishable with minimum 20 years imprisonment or life imprisonment. बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। Penetrative sexual assault on a child below which age? Question is below which age is punishable with minimum 20 years of imprisonment. Penetrative sexual assault below which age? इसका आंसर अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 5
के एम में. So if you want to know the answer, go to section 5 M part. You will get the answers. Penetrative sexual assault on a child below which age is punishable with minimum 20 years of imprisonment or life imprisonment. So the answer to it is 16 years. Now let's move to the next question, which is question number 11. The fine imposed under Section 4 subclause 1 of the Act shall be paid to victim to meet what? Medical expenses, rehab expenses, educational expenses or both. फाइन जो है वो कितना रहेगा? What will be the fine? For what expenses? The answer is very simple. For medical and rehab expenses, I've already explained it to you. Let's come to 12. Which section of the Act defines and explains aggravated penetrative sexual assault? Let's move ahead. कहाँ पे define किया हुआ है aggravated penetrative sexual assault? Aggravated penetrative sexual assault. So question number 12, please give me the answer. Where is aggravated penetrative sexual assault defined? Very good. The answer to it is section 5. Let's move ahead with the next question, 13. Punishment for aggravated penetrative sexual assault. Now this question, because ये sequence में इसलिए बहुत easy है. आप लोग प्लीज बताइए कहाँ पे punishment defined है for APSA. So I've got the answer, and the answer to it is of course 6. Let's move ahead to the 14th question. Sexual assault on child below what age is aggravated sexual assault? Sexual assault on a child below what age is aggravated sexual assault? इसका आंसर आपको 5 के एम में मिलेगा. 14. Quickly, can I have the answer? Sexual assault on child below what age is aggravated sexual assault? The answer to it is 12 years. Now let's move ahead. 15th. Which section of the Act defines and explains aggravated sexual assault? Aggravated sexual assault कहाँ पे defined है? Quickly. Which section defines aggravated sexual assault? Aggravated sexual assault कहाँ पे defined है? Let's move ahead. I've got one of the answers. Yes, quickly. Sugandha, Surbhi, Priyanka. And we have the answers fast. Where is it defined? Aggravated sexual assault. Very much relevant. It is defined under section 9. Let's move ahead to the 16th question. Punishment for aggravated sexual assault. Where is the punishment defined for aggravated sexual assault? Sequence में है इसलिए आंसर बहुत easy होगा. Very good. The answer to it is of course section 10. Let's move ahead. Question number 17. Under the Protection of the Sexual Offense of Children from Sexual Offences Act, which section defines sexual harassment? Sexual harassment मैंने आपको बताया
कि एक सेक्सुअल इंटेंट बहुत जरूरी है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए. सो वेयर इज इट डिफाइंड सेक्सुअल हैरेसमेंट? Sexual harassment, where is it defined? Yes, I've got the right answer. Section 11. 18th question पे आते हैं. A person which sexual intent shows any object to a child in any form or media for pornographic purpose is said to have committed which offense? Sexual assault, sexual harassment, outraging the modesty of a woman, of a child rather. तो कौन सा ऑफेंस क्रिएट हो रहा है? अगेन एज आई सेड सेक्सुअल हैरेसमेंट में एक वर्ड जरूरी है एंड दैट इज सेक्सुअल इंटेंट, राइट? Of course, this is a sexual harassment. 18, the answer is C, because there is a sexual intent also and he has shown some object. जो मैंने आपको बताया था sexual harassment में, जो हमने clauses पढ़े थे, utter any word, any kind of gesture making, किसी भी child को कुछ exhibit कराना, किसी भी तरह एक object को दिखाना, child को exhibit कराना, चाइल्ड को फॉलो करना डायरेक्टली और थ्रू सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडियम, थ्रेटन करना उस चाइल्ड को इन एनी मीडिया, या फिर चाइल्ड को किसी तरह का एंटाइसमेंट देना, अल्योरमेंट देना, दैट ऑल इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. So let's move to the next question. 19. Under this provision of the Act, whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment for. मतलब कोई भी who commits sexual harassment upon a child. What is the punishment for sexual harassment of a child? Sexual harassment of a child. What is the punishment? And under which section is it given? Sexual harassment is defined under section 11. So of course जो punishment है वो section 12 में लिखा होगा. तो कितना है fine? Very good. The answer to is 3 years plus fine. Now section 20, question number 20. Using a child in any form of media for the purpose of sexual gratification is. यूजिंग चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, किसी भी प्रकार के मीडिया में अगर चाइल्ड को यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इट इज offense of using a child for pornographic purpose, offense of sexual assault on a child, offense of sexual harassment of a child. Question number 20, the answer to it is very simple. We'll just move ahead. Offense of using a child for pornographic purposes. क्योंकि उसके जो हमने डेफिनेशन जो मेन जो सेक्शन में हमने पढ़ा था, यूजेस अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और इंटरनेट और यूजिंग चाइल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ pornographic purposes. So let's move to the next question, which is what is the punishment for second or subsequent conviction of the offense, for the offense of a child being used for pornographic purpose? क्या punishment है for subsequent conviction? कितने टाइम का हो सकता है, या सेकेंड टाइम अगर कन्विक्ट वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो क्या पनिशमेंट दिया जाएगा और कहाँ लिखा है ये? इसका आंसर सेक्शन 14 में लिखा हुआ है. सेक्शन 14 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंस में 5 इयर्स होता है एंड सेकंड टाइम ऑफेंस में एग्जैक्टली करेक्ट 7 इयर्स होता है. सो लेट्स मूव अहेड to the next question. Any person who has previously convicted against, stores or possess pornographic material in any form, किसी भी तरह से आपने स्टोर किया है, पोजेस किया है एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल फॉर एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, और आप भूल जाते हैं उसे डिलीट करना या डिस्ट्रॉय करना एंड और या फिर रिपोर्ट करना उसे टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विथ एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट, और आप उसे ट्रांसमिट और शेयर करने की इंटेंशन से भी उसे अपने पास रख रहे हैं, देन यू शैल बी लायबल फॉर अ फाइन नॉट लेस देन हाउ मेनी रुपीज. एज वी ऑलरेडी मेंशन्ड, ये अमेंडमेंट एक्ट से आया था. कितने रुपीज थे इसमें? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए कितना हमने फाइन बताया था?
₹5000 और सेकंड टाइम वो ऑफेंस हो रहा है तो उसका हमने कितना पनिशमेंट मैंने आपको बताया था ₹10,000। तो अगर फर्स्ट टाइम है तो 5000 और अगर सेकंड टाइम है सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो 10,000। ये भी अमेंडमेंट एक्ट से आया है। Let's move ahead to the next question, which is any person who stores or possesses a pornographic material in any form involving a child for transmitting, propagating or displaying or distribution, मतलब किसी भी तरह से उस मटेरियल को रखना फॉर ट्रांसमिटिंग प्रोपगेटिंग डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, देन फॉर हाउ मच टाइम विल यू बी फाइन्ड। ये भी मैंने आपको सेशन के बिगनिंग में एकदम बता दिया था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन फॉर हाउ मच टाइम विल यू बी लाइबल। So the answer to it I've got, the answer is correct. It is 23D, imprisonment which may extend to 3 years or fine or both, राइट। तो ये हमने कहा इसका आंसर देखा सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरिंग और पोजेसिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। किसी तरह से स्टोर करना या पोजेस करना एक फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल पर्पस, ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? आंसर इज टू क्वेश्चन नंबर 24। आंसर नहीं पता है तो आप सेक्शंस गो थ्रू कर सकते हैं, 15 1 2 3 एंड सेक्शन 16 ऑल ऑफ देम। 24 का आंसर आई गॉट सी, इट इज करेक्ट। और वहां पे ये बहुत लिखा अच्छे से लिखा हुआ है, फॉर कमर्शियल पर्पस अंडर सेक्शन 15(3) द पनिशमेंट कैन एक्सटेंड फ्रॉम 3 years to 5 years, and for second time offenders it is from 5 years to 7 years। ठीक है, let's move to the next question, which is question number 25. Which chapter of the Act provides for abatement of or attempt to commit an offence? Chapter number पूछा है, कहाँ पे abatement दिया हुआ है, कौन से chapter में abatement दिया हुआ है? This I have told you in the beginning of the session. Where is abatement written? For your hint, it is written in section 16 and 17, और 18 भी समझ लो उसमें attempt है। तो कौन से chapter में है? Please tell me under which chapter it is. The answer is correct. It is 4. Chapter number 4. Next question. So sorry. Under the Act, which section of abatement of to commit an offence is punishable? Abatement of commit to punish an offence is punishable. So just find the answer to it. Question number 26 का आंसर बता दीजिए। Under the Act, in which section abatement of committing an offence is punishable? अबेटमेंट का पनिशमेंट कहाँ पे दिया हुआ है? Yes, the answer to it is correct. Someone has given a correct answer to it, which is yes, 17. Now we are almost heading towards the end of the session. Question number 27. Please look at it. In which section punishment for attempt to commit an offence is prescribed under the Act? Punishment for attempt. Very good. Some of you have given the answer. It is, of course, 27. 27A. Section number 18 में लिखा हुआ है about attempt. Now let's move to the next question.
Which section of the act provides for reporting of offences? कौन से सेक्शन में रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ? अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है, वेयर विल यू रिपोर्ट, टू whom will you report, और कहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ offences? Yes, the answer to it is correct. Some of you has given me the correct answer. Let's move ahead. The answer is section reporting of offences. The answer to it is section 19. In 19, we report the offences. In Very good. Let's come to the second last question. Information shall be given. आप report किसे देंगे? Information किसे देंगे 19(1) में? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, लोकल पुलिस को, न्यूरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, किसे देंगे आप इंफॉर्मेशन? ओह वेरी गुड, समवन हैज आंसर्ड आई बिलीव. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सो वी कैन वेरी इजीली डू इट. यस, वेटिंग फॉर द आंसर्स. गुड. So the last question, the special juvenile police unit or local police shall report the matter to whom? Now the answer is also I've given it here itself. So they should report it to the both the child welfare committee as well as the special court. Now from here I have question from you. Do you want me to explain the rest half of the act also, or that much you can do on your own? And tomorrow what act would you like to discuss? Both. आप आंसर कीजिए in the comment section, in the link, what act you want to see for tomorrow. एंड डू यू वांट मी टू कंटिन्यू फर्दर विद दिस एक्ट? बिकॉज अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. स्पेशल कोर्ट्स के बारे में यू शुड नो, और विटनेस के बारे में कि हाउ हाउ टू एक्सट्रैक्ट द एविडेंसेस, वो सब जो पार्ट है थोड़ा सा वो बचा हुआ है. सो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दोज, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और इफ वी शैल मूव विद द न्यू एक्ट वील डू दैट. कि कैसे रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट वो बचा, और स्पेशल कोर्ट्स वाला मेन है. इफ यू already know it, let me uh, just move ahead with the next act. And if you think that you want to know it through me, let me know on the comment section below कि आपको जानना है कि एक्ट में. Okay, so the rest part is very simple actually. Special courts और वो जो major difficulties होती थी that I've already discussed, and I'm sure आपके बहुत अच्छे marks आने वाले हैं on ADPO examination. Anyone who's watching this session will get really good marks in their examination if they are relating to Rajasthan Judicial Services or ADPO examination of MP. So I'm sure you'll get good marks, you'll fetch good marks, especially with respect to these acts. So I have few suggestions. I will decide and let you know, and the decision will be there on the Telegram link. So if you've joined the group, you'll be informed which act we'll do for tomorrow. Thank you for your suggestion. We'll meet again tomorrow at 4:30. Take care.